Hello, welcome to Amor. Amor is you, Amor is me. So let's spread little love during this Pujo season. Your pal is back with another Pujo look. So today I've created a Karwa Chauth look. So सबसे पहले we will start with prepping our skin because यहाँ fast रख रही है ladies लोग. So क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं खा के तो their skin might look little pale and like little dull, lack of energy. So सबसे पहले important है कि अपने face को बहुत अच्छे से prep करें, अपने skin को बहुत अच्छे से टू मेक इट ग्लोई. मैं सबसे पहले टोनर लगा रही हूँ. सो आई एम यूजिंग प्लम्स टोनर. यू नो हाउ मच आई लव द प्लम प्रोडक्ट. सो ये मैं कोई स्पॉन्सर या फिर इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट इट्स जेन्युइनली मेरे स्किन में बहुत अच्छे से काम दिया. सो दैट्स वाई लाइक आई एम टेलिंग यू. सो ये बहुत माइल्ड सा टोनर है and this is for oily to combination skin type. So after using the toner, I am using the Good Vibes lemon serum. So what it will do, it will hydrate my skin and makes my skin plump, and as well as also it will help my foundation to sit well. Make sure you sanitize your brushes. Just spray your sanitizer in your brushes and make sure you clean them before you use. So after that I am using Lactocalamine's moisturizer. So it is good for the oily skin type as well as the dry skin type also. जिन लोग का oily skin type के skin है, I have a dry skin type, then also I use this. But जिन लोग का oily skin type है, it helps to soak all the oils from your skin. So the next step, I am using the primer. So I am using Wet n Wild primer, and this is a mattifying primer. You have to just dab the primer wherever you have the pores, especially जो pores है हमारे cheek areas में as well as chin में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर जस्ट डैप करो. डोंट ड्रैग योर प्राइमर. सो देन आई विल स्टार्ट विथ माई आईब्रोज. देयर इज नो ऑर्डर ऑफ द मेकअप आई एम डूइंग. सो आई एम स्टार्टिंग विथ माई आईब्रोज. So I am using 3-in-1 eyebrow pencil from the Sugar Cosmetics. So the best thing about this pencil is the nib. So the nib of the pencil helps to create a hair-like strokes in your eyebrow, and the pencil is very thin. So what it will do that कि आपका यहाँ पर जिनको natural eyebrows पसंद है, जिनको बहुत heavy नहीं पसंद है, and those who are beginners उनको लिए तो ये बहुत अच्छा है. And also एक प्रॉब्लम है इस पेंसिल के साथ दैट कि इट्स पेंसिल इज नॉट सो लाइक आप इसको प्रेशर ज़्यादा डाल के आप अपने आईब्रोज को नहीं कर सकते हो. लाइक यू हैव टू बी लिटिल लाइट हैंडेड, नहीं तो वो पेंसिल का जो निब है वो टूट जाएगा एंड सो यू विल वेस्ट योर प्रोडक्ट. सो मेक श्योर कि आप जब भी आईब्रो बना रहे हो बहुत लाइट हैंडेडली यू हैव टू मेक दी स्ट्रोक्स. आई एम यूजिंग NYX कॉस्मेटिक कंसीलर in my eyelid. So this is a full coverage concealer, and make sure that you buy a concealer which is 1 tone or a 2 tone lighter, so that कि आपका जो हाइड जो मार्क्स है या फिर आपके आईलिड में जो डार्कनेस है वो हाइड हो जाए. सो हेयर आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश टू क्लीन द एजेस ऑफ माई आईब्रो एज वेल एज मैं अपने आईलिड में वही फ्लैट ब्रश से आई एम लाइक अपने ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को. सो आफ्टर कंसीलिंग योर आईलिड्स मेक श्योर दैट कि आप उसको सेट करो. तो मैं Maybelline Fit Me का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई आईलिड सो दैट कि कोई क्रीज ना आए. So now for creating the eye look, I am using the eyeshadow palette from the Sugar Cosmetic Warrior. So it has smoky as well as nude colors. तो बहुत अच्छा smoky eyes इसमें create होगा. It has warm as well as dark grey color as well as black इसमें है. So for the transition color, I am using the light peach shade in the crease area. और मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग दी ब्लैक कलर, ब्लैक एंड ग्रेइश कलर थोड़ा है, तो आई एम टेकिंग दैट कलर एंड देन आई एम जस्ट डैबिंग दैट कलर इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज, एंड देन मैं थोड़ा इनर की तरफ में उसको मैं थोड़ा ब्लेंड करूँगी. सो आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ हाफ कट क्रीज फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज टू द आईलिड. So I am using the same concealer from the NYX. So with the flat brush or with the hand you can create the cut crease. Make sure कि आपका जो cut crease area है वो बहुत clean रहे, बहुत cleanly वो आप उसको apply करो, so that कि pigment जो है वो बहुत अच्छे से cleanly वहाँ पर दिखाई दे. So then from the same palette I am taking the light skin color to dab in the conceal area for setting the concealer. After that I am taking a golden shade. It's a golden shimmery shade, and then I am applying in the inner corner of my eyes, in the cut crease area to the eyelid. Then I am blending the black color, the darkest color which I have applied in the inner corner of the outer corner of my eyes. So after that I will be applying a eyeliner. So I will be creating a wing liner. So I will not go very bold, but I will like to keep it a subtle but a wing liner. So the best thing about this palette is that the palette is not powdery, और आपके जो कलर्स है दे डोंट फॉल आउट. सो बट जो भी जो शिमरी कलर्स है विच हैव फॉलन इन द लाइक इन द लोअर पोर्शन ऑफ माई आईज,
तो मैं उसको एक क्लीन वाइप से उसको वाइप कर दूंगी। तो बेस के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। दिस इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड दिस इज गुड फॉर द ऑयली स्किन टाइप बिकॉज ये बहुत मैटिफाइंग फाउंडेशन है, बट उतना नहीं जितना फिट मी है। एंड ऑल्सो आई हैव बॉट अ 1 शेड लाइटर फाउंडेशन बिकॉज ये, क्योंकि जो ये फाउंडेशन है ये थोड़ा ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो आपके कुछ देर के बाद 2-3 आवर्स के बाद, स्पेशली 2 घंटे के बाद वो आपके स्किन के कलर के साथ वो पूरा इट विल टोन डाउन। After that, with my Fit Me loose powder, I am setting my face. So it is a very good loose powder and it will suit every skin type. Like स्पेशली जिन लोग का ऑयली स्किन है तो उन लोग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मैटिफाइड लुक देगा। तो आफ्टर दैट आई विल बी कॉन्टोरिंग माई फेस। आई डोंट कॉन्टोर मच इन माई फेस, बट फिर भी आज मैं थोड़ा कॉन्टोरिंग करके दिखाऊंगी। तो आई एम यूजिंग द LA Girl कॉन्टोर स्टिक and I am using the darkest shade from this range. And then I am lining it in the wherever on the face I want to be concealed. Specially मैं cheek bones को और nose में थोड़ा सा contouring करूँगी, as well as थोड़ा मेरा double chin है तो उसको भी थोड़ा hide करूँगी, और with the help of the sponge and my hand. And it is also very important to set your contour. So for that I am using L'Oreal Paris bronzer to set my contour areas. So after that I am using the blush from Swiss Beauty. It has highlighters as well as blush. So I am using the peach color from the shade and I am applying in the apple of my cheeks to the outer corner of the face. So उसके बाद I am applying the highlighter shade in the inner corner of my eyes and then I am applying the mascara in my eyelashes. So for that I am using the Blue Heaven mascara. And it is a very natural giving mascara. This mascara will not just voluminize, but it will just give you that lengthen and just a natural look. So today I will be wearing falsie, so I am using the PAC Cosmetic falsie. I think the number is 073. So I will be mentioning it in the description down below. So you have to be little careful, don't spoil your makeup while applying the eyelashes. So if you don't want to apply eyelashes, don't worry, go just add the 2-3 coats of your mascara. That's it. It will just open up your eyes. मेरे तो eyelashes ही नहीं है, तो that's why मुझे थोड़ा सा mascara लगता है। So for the highlighter, I am using the Quarters palette from the Lakme eyeshadow palette. So this has a very good rose gold shade as well as the champagne shade. So I love to highlight my face with those colors. So this is the eyeshadow palette also, और आपके highlighter में भी काम आ जाएगा. So for the lips I am using Stay Quirky's lipstick. So Stay Quirky lipsticks you will find in the purple. So I am using their matte lipstick, matte bullet lipstick. So you can see it's a good cherry lipstick and it's a very good color. So I will be adding the black color in the outer corner of my eyes and then I will be smudging it with the light peach color so that कि वो थोड़ा सा smudge out look लगे. I am applying the black eyeshadow and then blending it with the lighter shade. That is the peach shade and then I am blending it out. You have to smudge it properly so that वो थोड़ा सा eyes थोड़ा सा pop out लगे. So with that I have completed my makeup look and I am wearing a sari as well as I am adding the mang tika, the jewelry, and with that I am good to go. So if you like my video, don't forget to give a thumbs up, don't forget to share, subscribe to my channel and also press the notification bell so that you get notification when I update the videos. Bye, love you. How does it feel to breathe?